Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Preeti. How are you? Fine, ma'am. All right, students. So, good afternoon, and I hope you're all fine. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. So, last week we had started with reading comprehension. So, I hope you got the Yes, chance ma'am. to attempt the answers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, here we have it. All right. So, we were discussing these questions, and I believe we had discussed the first question already. What do poets and cosmologists have in common? Right. So I told you the answer is somewhere here that both the poets and cosmologists, they have imagined two possible fates for Earth. Right. So since like Robert Frost imagined that either the world will end in fire or in ice, and the cosmologists envision that either it would be endless expansion or the big crunch. Right. Then let's move on to the second question. What determines the evolution of the universe? Yes. So who would like to answer? May I, ma'am? Yes, please go ahead. The evolution of a universe is determined by a struggle between the momentum of expansion and the pull of gravity. Wonderful. So we have the answer here quite clear, right? And what is the Hubble constant? Ma'am, may I? Yes, go ahead, Akanksha. Current rate of expansion Is measured by the Hubble constant, right? is measured by the Hubble constant. So you can say that it is, usually you would know better that in science we have these constants, that is their decided values to calculate certain, to make some calculation. So in this case, the Hubble constant is used to measure current rate of expansion. So I think that would suffice, right? You don't need to mention this whole sentence there. All right. So the next one is, what is the cosmological constant? Yes, anybody? May I, ma'am? Hanji Preeti, go ahead. The expansion of the universe is actually accelerating or speeding up like the red curve, which implies the existence of a form of matter with a strong negative pressure, such as the cosmological constant. All right. So,
cosmological constant is this kind of existence of a form of matter, right? Which has a strong negative pressure. Then what is the role of the dark energy in the expansion of the universe? May I, ma'am? Hanji Preeti. If dark energy in fact plays a significant role in the evolution of the universe, then in all likelihood the universe will continue to expand forever. All right. So just a suggestion from my side, instead of completely just speaking the sentence verbatim from the comprehension passage, you can also change its language to suit your answer, right? Okay, ma'am. So Okay, like ma'am. here we have recent observations of distant supernova have suggested that the expansion of the universe is actually accelerating or speeding up, which implies the existence of a form of matter with a strong negative pressure, such as the cosmological constant. This strange form of matter is also sometimes referred to as a dark energy, right? So dark energy हमें पता चल गया कि it is a form of matter with a strong negative pressure, right? अब उसका role क्या expansion में that it is helping in the evolution of the universe, it is helping in the expansion of the universe, right? So this is what is believed. Then what is the conclusion from satellite studies? Um, Geometry of the universe is flat and will expand forever. Yes, that is good. So we have this answer here that the satellite measures the basic parameters of the Big Bang theory, including the fate of the universe. And the results are suggesting that geometry of the universe is flat and will expand forever. So this what we have learned from satellite studies. So I hope it was not too tough, the comprehension passage, right? इसमें आपको थोड़ा सा I agree feel हुआ होगा कि आंसर्स इतने डायरेक्टली नहीं है, आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ रहा है to reach the answers, and also at times you have to change the language of the sentences, but usually in your exam you get much simpler comprehension passages, right? So they are at times followed by 2 to 3 questions to be answered, and one odd question could be find the word which means the same, or find the word which means the opposite of. So in those cases, even if you don't know the exact meaning of the word, what you can do is just locate that word in the comprehension passage. जहाँ पे भी वो word आ रहा है ना, आप वो sentence read करोगे, आपको sentence के context से कुछ समझ आ जाएगा कि इस word का क्या meaning होगा, right? तो ऐसे चाहे हमें exactly कभी नहीं पता होगा, of course in the exam you might not have access to a dictionary also, तो उसमें हम ऐसे अंदाजा लगा के and you can answer. Most of the times your estimate is going to be correct. All right, so I'll stop sharing this screen and I'll let you know what we are planning to do today. So I'm going to start with letter writing. So just my request to you all, just keep a pen and paper handy, right? So that you can write down and note the formats for various letters, right? I will share a PDF as well later, but for now just get a paper and pen and आप उसके सिर्फ formats note कर लो. Then gradually we can attempt to write a particular letter. So I'll be marking the format on the board behind me. Just let me know if it is visible. All right. So पहले हम एक बार discuss करते हैं that we have informal letters and then we have formal letters. So as is clear from the words, the informal letters are the ones that send to your friends, maybe family members, जिसमें कोई office का या कोई ऐसे organization का system नहीं है, right? You are mostly sending those letters to somebody you know personally. आपके उनके साथ जैसे friend हो सकता है कोई आपका, maybe your relatives, maybe somebody abroad, right? Though I believe आजकल letter writing का इतना trend नहीं रहा. So has any of you ever sent a letter, posted a letter to somebody, your friend, maybe your relatives? No, ma'am. No, No, ma'am. that is surprising. So do you have any of you who have relatives abroad? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So Kudeep and Lavleen have relatives abroad. Okay. So bache, why not next time, just to surprise them, send a letter instead.
right? I know this काफी इसका तो अभी it's almost gone. Even the post office people, they're very surprised if if you will go there to send a letter. No doubt राखी के around काफी busy होता है. We do send राखीज. However, the trend of letter writing is on a decline because we are always connected on WhatsApp, Instagram, Facebook, right? So it's just a matter of click or touch away. Anyway, so still, if you will realize, जो हमारे official है ना, the talking about the formal letters, they are still quite used. क्योंकि जो भी हमारा ऑफिस वर्क होता है ना, नो डाउट वी हैव ईमेल्स ऑल्सो, बट काफी हमारा ना अभी भी पेपर में वर्क होता है. तो ऐसे यू हैव टू राइट अ प्रॉपर लेटर, गेट इट साइंड, राइट? अगर आपने कोई कंप्लेन करनी है, फॉर एग्जांपल मेयर को कंप्लेन करनी है, पुलिस को कोई कंप्लेन करनी है, आपने कुछ उनके नोटिस में लाना है, अगर आपने एडिटर को लेटर लिखनी है, राइट? अगर इधर आपका कॉलेज में कोई वर्क होगा, लेट्स से यू वांट टू रिक्वेस्ट समथिंग, you want to ask for extension of any practical date or something, then that is when letter writing comes handy. So why is it still relevant and why is it a part of your syllabus? Precisely due to this reason कि क्योंकि अभी ऑफिस वर्क में ऑफिशियल टर्म्स में अभी भी लेटर्स यूज होती हैं. कोई भी हमें अगर आपने किसी को कोई नोटिस भेजना है या कुछ भी ऐसे होता है, आपने किसी की कोई कंप्लेंट करनी है, सो स्टिल लेटर राइटिंग कम्स इन हैंडी. So this is why we are going to take a look at the formats. But just for your information, I am going to discuss the format for informal letter as well. So let's start with that since that one is easier, right? So it's pretty easy. You just have to write your address. ठीक है जी? Then you mention the date, and then you directly start with dear whoever, maybe your friend or somebody. All right. So I hope the board is visible to you all. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. And my handwriting is legible. I hope it's not too bad. No, ma'am, it's perfect. No, ma'am. All right. Give me a moment. So you ended by, usually saying yours lovingly. So here you are going to discuss whatever you want to. So friend को अगर लिख रहे हैं, we'll ask how have you been, what have been you up to all these days. Maybe you'll inform something about your own. Okay, this is what I am doing, or I'm planning to visit, I'm planning to travel here, and you ask the other person as well. It's almost like whatever we would talk on phone these days. ठीक है? तो आप वो letter में mention करेंगे. And then you can divide the body into 2 to 3 paragraphs depending on how much material you have, right? And then we end by saying yours sincerely, yours lovingly, and you write your name. So this is for the informal letter. Now let's talk about the formal letter. So I hope you have all noted it down. It's pretty simple. Your address in 2 to 3 lines, you leave a line blank, then you mention the date, another blank line, then dear whoever, and you start your letter. And usually you can start by, I hope you are doing well. It's been so long since we talked, right? And then you can just end it by yours sincerely, yours lovingly, and your name. So I hope you have noted it all. Just let me. Yes, ma'am, we have done. ठीक है जी. Should I Yes, ma'am. erase the board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The PDF as well. So now we talk about the formal letter, right? So now what happens अगर आप जैसे अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो ना, यूजुअली आप अपना एड्रेस नहीं मेंशन करते, आप डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हो, right? So it could be principal,
Jalandhar. So you mentioned that the date directly of we don't need to write the word date as such, right? You mentioned the subject. Just we can go with the subject of being your long absence or you want a longer leave, right? So it could be a leave application. So you mention why you need the leave or अगर आप let's say when respected sir or ma'am. Please note the spellings for ma'am. There is an apostrophe and am. एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. दोनों ऐसे नोट कर लो. MAM directly is incorrect. Okay, it has to be MA apostrophe AM or MA and apostrophe M, right? And then you start that I wish to inform you. Now please note, abhi we don't any longer use that language of I beg to say this. No. See, जो आपको मैं बताती हूँ, English is a colonial language, right? So British people, this is their native language. They started with all this trend of I beg to inform. ठीक है? Why? Because वो हमें एक subordinate position पे रखना चाहते थे always, right? We do not have to say I beg to inform. You have to be in your tone. You have to be polite. You have to be respectful. But आपने ऐसे बिल्कुल वो कि हम बिल्कुल ऐसे पैरों में पड़ गए वैसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी. सो आई बेग टू इन्फॉर्म वी डोंट यूज इट एनी मोर. Yes, you can say I wish to inform that I am a student of so and so class. I could not come to college for 2 weeks because I had maybe typhoid, right? So I request you to grant me leave for these 2 weeks. I have attached my medical certificate along, right? Then of course you can say I shall be obliged. So obliged again, that is acceptable word, right? क्योंकि कुछ जैसे ना हमारी official language होती है, obliged हो गया, I want to bring this to your kind notice. Now let's say you are writing a letter complaining to the mayor about something. So in that sense you will be using these words obliged, kind notice, क्योंकि आप किसी person से बात कर रहे हो जो आपसे बहुत senior है, आप उनको जानते नहीं हो, आप official capacity में उनसे बात कर रहे हो. So in that case it's a good idea to use these terms. जैसे कुछ हमारी ना कह लो गवर्नमेंट टर्म्स होती हैं, सरकारी टर्म्स होती हैं, दे स्टिल यूज. तो ऐसे हम सिंपल ये नहीं बोलेंगे आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस, आप लिख दोगे आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस. कि आपकी जो सारी टोन थोड़ी रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, राइट? सो लेट मी जस्ट इरेज दिस. And then you will mention whatever is, and then in the end you can say I shall be obliged, then thanking and yours sincerely. तो बेटा यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक हो जाती है वो क्या है? थैंकिंग वर्ड है तो टी कैपिटल आएगा, योर्स ये फर्स्ट वर्ड है वाई कैपिटल होगा, बट यू एंड एस ये स्मॉल में होंगे. यूजुअली क्या होता है, इफ यू नोटिस यू को भी बड़ा लिखा होता है थैंकिंग यू. दिस इज इनकरेक्ट. यू इज द सेकंड वर्ड इन द सेंटेंस और दिस फ्रेज, so y would be small here, but thanking में t and yours में y they would be capital. And also make sure you know the spellings of sincerely. Then you will write your name, your roll number and your class, right? तो जो प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं ना उसमें हम अपना एड्रेस नहीं मेंशन करते. बट इफ यू आर राइटिंग लेट्स से अ लेटर टू द मेयर और मे बी यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, तो उसमें आप अपना एड्रेस भी मेंशन करोगे. लेट मी टेल यू हाउ. I'm sorry, I forgot to ask you. I hope you had noted this down. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. All right. Anybody, have you bought the book that I recommended, which is by Thakur Publications? Have you had a chance to visit the book market yet? हाँ जी, yes or no? Book market गए थे? कौन सा public है? No, ma'am. Okay, ठाकुर पब्लिकेशंस की बेटा मैंने बताई थी बुक.
It is usually for BCom students. I'll just tell you again. हाँ जी, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है फॉर बीकॉम एंड बीबीए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की बुक है इंग्लिश की, राइट? सो हाँ जी, so I would suggest that you can get that book for your reference, right? So now let's talk about letter to the editor. So for the same, you will first mention your address. Then you will write the date, and then you will write the editor's address. Followed by the subject, जो कि आपका आर्टिकल जो आप भेज रहे हो ना, उसका जो टाइटल होता है, दैट इज योर सब्जेक्ट. Let's say you are complaining about the bad roads in your colony, right? So you can say pothole roads in ABC colony. मतलब मैं ABC लिख रही हूँ, of course you will mention the whatever relevant, right? Then again, respected sir. And how you begin? You can say, I am an avid reader of your newspaper, and I wish to inform my views, or I wish to, take my views to the readership through your columns, through the columns of your newspaper, right? So आप इस इधर ऐसे start कर सकते हैं that I am an avid reader of your newspaper. ठीक है, जो न्यूज़पेपर का ना आपने देखा होगा, कई बार इंग्लिश डेली, हिंदी डेली भी लिखा होता है, योर इंग्लिश डेली. इसका मतलब है कि ये न्यूज़पेपर रोज होता है पब्लिश एंड इट्स इन इंग्लिश, राइट? सो आप जैसे लीडिंग इंग्लिश डेली ऑफ पंजाब, तो इसमें क्या कह देते हैं कि ट्रिब्यून, because mostly people are, they are subscribed to Tribune or HT, राइट? तो इसको हम इंग्लिश डेली भी बोल देते हैं, ठीक है जी. एंड देन यू कैन से, एंड आई विश टू express my views through the column of the newspaper, of your esteemed newspaper, right? Again, now the use of these words, esteemed. मैम आपने I am के बाद क्या लिखा है? I am an avid reader. Avid होता है कि I am a very regular reader. I am your, let's say, long time customer, subscriber, right? मैम हाँ जी चंदर. मैम शुरू तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दियो, मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया मैम क्लास. We have started with the letters. तो मैंने informal letter का भी format बताया था, right? And then we discussed a form. Now we have started with formal letters. So for formal letters, पहले we discussed letter to the principal. So उसमें सिर्फ ये difference है कि आपने अपना address ऊपर नहीं mention करना. You can directly start with your principal's address, subject, इधर बीच में date. All Okay, right. ma'am. Then you start Yes, ma'am. respected sir, and whatever is your matter, and teachers are thanking you, yours sincerely. Okay, ma'am. अच्छा, another point to take care of, बच्चे आजकल ना ऐसे यहाँ पे एंड में ना कॉमा भी इतने यूज होते हैं. जैसे आपने एड्रेस लिखना है, लेट्स से यू स्टे एट हाउस 641, ठीक है, इधर जरूर कॉमा आएगा, अर्बन एस्टेट फेज 2 जलंधर, ठीक है. नोट के इधर एंड में हम कोई कॉमास नहीं लगाते, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते, राइट? यू कैन डू. मैम ऊपर वाली लाइन दिस दी नहीं भाई. कौन सी बेटा? जस्ट एड्रेस लिखा है मैंने. हाँ जी मैम ऊपर. वो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैंने रैंडम एड्रेस लिखा है. आपने नोट करना है कि किसी एड्रेस के विद इन तो आएगा इधर कॉमा, जो भी चाहिए. यहाँ एंड में नहीं लगाने हमने कॉमास या फुल स्टॉप नहीं लगाना, राइट? सो आई होप दैट मेक्स इट क्लियर. सिमिलरली जब नीचे आपने लिखना है योर सिंसियरली, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिख रहे हो, यहाँ पे भी ऐसे कॉमा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. डायरेक्टली रिस्पेक्टेड सर लिख के आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. Okay, ma'am. Okay, now this is for letter to editor. So you may write, I am an avid reader, I am a regular reader, right? And after that,
आपने जब लिख दिया कि आई विश टू इन्फॉर्म माई व्यूज थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक माई व्यूज टू द रीडरशिप। रीडरशिप होता है कि जो सारे लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है जी, सारे कलेक्टिव रीडर्स के लिए एक वर्ड है। देन आप नीचे अपना जो राइट अप है वो स्टार्ट कर दोगे, जैसे भी वो डिवाइडेड इनटू कह लो 3 पैराग्राफ्स है या 4 पैराग्राफ्स है। कह लो आपने अगर पोल्यूशन की बात करनी है, यहाँ पे हम जैसे रोड्स की कंप्लेन कर रहे हैं, फिर आप उसका अपना सारा लिखोगे एंड इन द एंड यू वुड से आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। ओके, ये राइटिंग समझ नहीं आएगी आपको मैम आई एम के बाद क्या लिखा है? बेटा, एवरी बेटा आई राइट इट फॉर यू हियर। ठीक है जी, इसका आपने अब डिक्शनरी में मीनिंग चेक करना है, तो दैट इज वन वेरी स्मॉल वर्क फॉर यू, राइट। जस्ट अ टिप फ्रॉम माय साइड, एक कोई भी ना डिक्शनरी, मिरियम वेबस्टर, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, अपने फोन में डाउनलोड करके रख लो। इट्स वेरी कन्वीनियंट टू चेक द वर्ड मीनिंग्स वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग, क्योंकि आपके फोन में ही होगी, यू डोंट इवन हैव टू गूगल इट, वहां पे डिक्शनरी में वर्ड डालो, यू विल गेट द वर्ड्स मीनिंग्स एज वेल एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सारा कुछ ही आ जाता है, ठीक है। सो मस्ट डू दैट फॉर इजियर लाइफ, राइट। सो इधर आप अपना जब लिख दिए तो नीचे यू कैन वाइंड अप बाय सेइंग आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है जी, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली एंड योर नेम। तो वो वाला नीचे वाला पैटर्न सेम ही रहेगा। और यू कैन से आई शैल बी obliged if my views are shared with the readers, ठीक है। देन सेम जैसे हमने प्रिंसिपल वाले लेटर को वाइंड अप किया था, thanking you, yours sincerely, and your name. All right. So I hope you have noted this down. You can just note down the steps. के पहले अपना address, date, editor's address, subject, then the salutation, then the body of the letter, and same way you wind up. Yours sincerely, right? So I hope you have all noted this down. May I erase it? Yes, ma'am. Sure. All right. So everybody, I will be sharing a PDF or a sample for the same, so don't worry. बाकी आपकी बुक में भी given होगा. So any doubts so far? No, No, ma'am. ma'am. All right, wonderful. So अभी एक और हम लेटर देख लेते हैं, ऑफिशियल लेटर ओनली। लेट से आपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेन करना है कि आपके लेट से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे इन योर एरिया, राइट। सो हाउ कैन यू राइट फॉर द सेम? यू कैन स्टार्ट बाय, इवन इन ऑफिस लेटर्स ना, अब जैसे ये जो मेयर को लेटर लिखनी, इसमें 2 फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है कि आप पहले ऊपर मेयर का एड्रेस लिखोगे, जो कि ऑफिस का एड्रेस है, डेट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, देन रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, नीचे आप अपना फुल एड्रेस दोगे, राइट। सो व्हाट आई हैव सीन इज practically this format is followed, but in the books you will find at times it starts with your address first, right? So I think both the formats will work for the exam. इधर जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली जो फॉलो होता है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। सो इधर आप जैसे लिखोगे म्यूजिकल, and the municipal corporation, right? Then you write the date, जैसे आज है 6 September,
2021, then the subject, right? तो इधर आप mention कर सकते हो, you know, long absence of सफाई कर्मचारी from duty. This will be capital. All right. Even the word सफाई कर्मचारी will be capital because if you notice, इसको usually ऐसे capital में ही लिखा होता है. From duty in whatever is the name of your area, right? Then you will write respected sir. Now make sure, जैसे future में भी आप कभी लिखते हो ना, या email के through ही अगर आप अपनी उनको complaint भेज रहे हो, make sure you know the person you are writing to. ठीक है, ठीक है, डीसी आपके हैं या जो भी मेयर है, whether it's a man or a woman, so accordingly you are going to write respected sir or respected ma'am, right? Then you can say I wish to inform you, or I wish to bring it to your kind notice that I am a resident of this area and Safai Karamcharis are not reporting to duty in our area since a long time, whichever time it is. That has led to, you know, the garbage not being collected, right? People being inconvenienced, leading to health hazards, hygiene hazards. I request you to look into the matter. I shall be highly obliged, right? अब ऐसे अपना सारा वो mention कर सकते हो. And again, you end with thanking you, yours sincerely. And नीचे आप अपना जब name लिख रहे हो ना, whatever is your name, you can then write resident of and आप अपना complete address यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है? So basic ये है कि मैम नेम के नीचे एड्रेस आना है. हाँ जी, यहाँ पे एड्रेस नीचे आएगा. ओके मैम. Well, I hope that was your question. मैम नेम के नीचे एड्रेस आएगा. मैं हाँ जी, अपना नेम लिख के ना, फुल नेम लिख के आप रेजिडेंट ऑफ लिख दोगे. ओके मैम. राइट. सो जैसे ये जो प्रॉपरली यूज होता है ना फॉर्मेट, वो मैंने ये लिखा, बट आपको बुक्स में दूसरा भी मिलेगा जिसमें कि ऊपर पहले आपका एड्रेस लिखा हो, राइट, देन डेट लिखी हो, देन जिसको आप लिख रहे हो, ठीक है, फिर सब्जेक्ट. बट ये वाला प्रैक्टिकली ज्यादा आजकल यही यूज होता है, राइट, स्पेशली व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग टू समवन इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी. जैसे आपके मेयर हो गए, मे बी आपने एमएलए को लिखना है या डीसी को कंप्लेंट करनी है या आप अपने एरिया काउंसलर को कंप्लेंट करनी है, तो ये वाला फॉर्मेट ज्यादा यूज होता है. सो आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन. मे आई इरेज इट? Yes, ma'am. यस Yes, मैम. ma'am. ऑल राइट. सो जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है ना बेटा, वो ऐसे ही कुछ लेटर आपको आएगी इन केस इट इज देयर, राइट. So it could be letter to, ये हमारी इसी कंप्लेंट्स के वाली ज्यादा आती है. लेटर टू एडिटर इतनी बार नहीं आती. It is most likely going to be, you know, something like this, that write a letter to so and so complaining about this thing in your locality, write a letter to your PC complaining about this. This is because again, if you notice, this is what is going to actually be used more by you in future also. ठीक है. अभी इनफॉर्मल लेटर्स एज आई टोल्ड यू तो बिल्कुल ही ट्रेंड चला गया. फॉर्मल में ऐसी वाली लेटर्स लिखने की ज्यादा आगे मतलब अपॉर्चुनिटी आती है या चांस आता है, क्योंकि ये अभी भी ज्यादा हमारा जो ऑफिस वर्क है इसी कारण ऐसे ही चल रहा है. By writing letters, even if you write an email, right, now all our officials, they have their emails, the DC, the municipal commissioner, the ADC, right, they all have their official IDs. Even if you're writing in that, this is the format for email as well, which you will be following, right? Yes, ma'am. यहाँ पता कैसे होता है कि आप अपनी हैंड रिटन लेटर लिख के या प्रिंट आउट निकाल के अपने सिग्नेचर्स करके उसकी स्कैन कॉपी भेजते हो. तो लेटर तो अभी भी वेरी मच इन यूज है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस वर्क. ऑल राइट. So that is all. That is what I had planned to discuss. So any problem in this one? No, ma'am. So No, I ma'am. try to, you know, include this in your assignment कि आपकी एक बार practice हो जाए letter writing की. So whenever I give you your first assignment, I'll try to include one letter in the same. Right? Okay, ma'am. ओके मैम.
Okay, Otherwise, ma'am. at times we might not be practicing on our own. And of course, it is hard to take out time to do that. तो मुझे होगा कि आपकी assignment भी हो जाएगी and एक बार आपकी practice भी हो जाएगी for letter writing. So Okay, ma'am. anything else you might want to ask? Any doubts you have? No, ma'am. So classes are going fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's quickly take your attendance. So I have Vishakha in class. Anji, Vishakha, are you there in the class? Akanksha, Yes, ma'am. Preeti, Yes, ma'am. Simran, Deek, Ginni Sharma, Evelyn Kaur, Yes, ma'am. Chandar, Present, ma'am. Jaspreet Kaur, Present, ma'am. Mandeep Kaur, Kajal, Jasveer Kaur, all right, Kajal. And is there Jasveer in the class? Then Randeep Kaur is there. Jasveer is not here. Randeep is not here. Then do I have Aarti Sharma? Present, ma'am. All right. Bharti, Present, ma'am. then Nitin Kumar, not here. Maninder, Kuljeet Kaur, Yes, ma'am. Shana Basri, Present, ma'am. Smiledeep, No, ma'am. Sukhmanpreet, not here. Sana, Present, ma'am. all right. Rachna is not here either. All right. So Sana, I believe this is your first class with me. And Aarti, is this your first class as well? Yes, ma'am. All right. So do you both have the syllabus with you? No, ma'am, I have no syllabus. Can you send me the again? Okay. So I'll put it, there is a PDF, right? So I'll share that in your group. Otherwise, बच्चे, in case you want to find it on your own, तो आपको PTU की ना website से भी मिल जाएगा. Okay, ma'am. So download it for the first semester. तो उसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, बट मेक श्योर आप सही बैच का डाउनलोड कर लो. ठीक है, तो जैसे रिसेंटली 2018 में आई बिलीव सिलेबस चेंज हुआ है, सो आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना, सिंस दैट इज व्हाट इज बीइंग फॉलोड फॉर यू. सो अदरवाइज इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, तो अभी हमने कुछ क्लास में ज्यादा स्टार्ट नहीं किया है, हार्डली द वेरी बिगिनिंग ऑफ द यू नो द सिलेबस. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट वीक किया था, right? And this week we just like completed the letter writing today, so you did not miss much, don't worry. Otherwise, let me all the lectures are recorded and put on YouTube, so in case you want to go back and watch any of the previous lectures, you can do so. मैं आज अपने इस वाले लेक्चर की लिंक शेयर करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी लेक्चर्स भी कहाँ हैं. ठीक है जी? Yes, ma'am. All right, so that will be all. I'll end the class now. And thank you for attending the class. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you.